So am I audible? Yes, sir. Okay, fine. So we are good to start. We will start now. So, okay, in the last session we have seen some of the problems based on the Huffman coding. So today we will solve some 5 problems and we will complete the Huffman coding. So I've given you one problem to solve. The problem was like this. So the probabilities were given as 0.40, 0.15, let me start my camera. To start. 0.15, 0.15, 0.15 and 0.15. So this was the problem which I have given to you. So everybody has solved this. Should I try to solve here? If you are, so what are the code which we are getting for? So please tell me the code which we are getting for this. So code for 0.40, what is that you are getting? 1. 1. Okay, fine. And 0.15? First 0.15, what is the code which we are getting? 0, 0, 0. Triple zero. Somebody has told me the answer. Triple zero, 001, 010, 0, and 1, 0. 011. 0, 1, 1. Okay, fine. And so this is correct, I think. So this is correct. So everybody is getting this code. So I guess it is correct. So can you tell me the entropy? What we are getting? What is the entropy? Sir, 2.12 bits per message. 2.12 bits per message. And code word? Code length, sorry, n bar, code length. Code length. So I think entropy, if you'll calculate, I think the value will be 2.17. It will be not 2.12. So how many of you solved? Okay, Amisa has told 2.17, 2.1, 2.20. Yeah, fine. Okay, so this is the correct answer. 2.17, 2.20, and if in the percentage, you will get 98.6, close to 99%. So this is the answer which we are getting for this code word. So if everybody is getting, should I move to the next problem? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. if anybody has any doubt in this question, so we will try to solve some more problem, and after this question I will give you some RTU problem which has came. So first of all we'll try one simple problem, and after that I'll give two RTU questions which they had asked for 88 marks. So so let's see how you are dealing with that problem. So one question was like this. So 0.35, 0.20, and 0.20, 0.15, and 0.10. So the same problem which we have solved from Shannon for coding, please solve it with the help of Huffman coding. What is the code which you are getting? So I don't want entropy code length. Komal has told 00. So let me see. So what Komal has told? 00, Sir, 0, 0, 1, 1 0. 0 1 1 0 1 0 0 1 1. So please everybody try to solve it. Then we will see is it correct or not, because only Komal and Himu has told me the answer. So please try, everybody, please give a try and tell me the answer. Is it correct or not? Just verify it. So please verify it. Is this correct or not? Divyanshi has told 001011. Let me see. Divyanshi told 001011 010. So I think this is correct. Everybody is getting the same answer. If anybody has any doubt, please tell me. So I think this is correct. This answer is correct. The same code is everybody. If you are getting the same code, it is correct. So after you have got the code, you can easily calculate entropy, code length, and efficiency. Sir, hello. Tell.
सर इसका एक अल्टरनेटिव आंसर भी निकला था, पर उसमें सीक्वेंस अलग था थोड़ा सा। देखो अल्टरनेटिव आंसर वो अगर निकला होगा, क्या था आपका अल्टरनेटिव आंसर? एक मिनट सर। सर 035 के लिए तो 1 है। अच्छा, कैसे निकाला आपने? 020 कैसे वन वन कैसे आया सर। आपका? हाँ, सर जो मतलब इसमें अपन जब कैलकुलेट करते हैं तो मैंने एक बार 0.35 को ऊपर कर लिया और 0.40 को नीचे कर दिया। 0 पॉइंट किसको नीचे कर दिया? 0.40 उसको नीचे कर दिया और 0.35 को ऊपर कर दिया। तो अच्छा, तो 40 तो ऊपर ही रहेगा ना मनोज, अगर दोनों को तुम ऐड करोगे तो 40 तो ऊपर ही चला जाएगा। 0.40 हाँ वही। 0.40 तो क्योंकि हमको कोड क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जब तुम आप जो बोल रहे हो 0.35 0.20 0.20, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये 40 बन जाएगा 0.40, तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा 0.40 और ये 0.35 नीचे आ जाएगा। तो सही प्रोसीजर तो यही है। फिर इन दोनों को आप जोड़ोगे नेक्स्ट स्टेप में। हाँ तो बाकी जो भी आप अल्टरनेटिव मेथड लगाए वो शायद सही नहीं है। आप जो मैंने बताया वही लगाओ, आंसर सही आएगा। सबका आंसर सेम आ रहा है और आपका भी सेम आएगा। नहीं सर, मेरा भी सेम ही आया था, पर मैंने एक अल्टरनेटिव से किया था सॉल्व करने के लिए, नहीं तो नहीं, वो तो उसमें आप अलग था। अल्टरनेटिव मेथड मत लगाओ, क्योंकि आप ये हमेशा हमेशा हमको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जब भी हम ऐड करेंगे तो उसको भी अगले स्टेप में डिसेंडिंग में ही लिखना है। उसको फिर से अलग, ओके। नहीं तो कोड गलत हो जाएगा। आपका इनकेस सही आ गया होगा, पर हर कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। ओके सर। आप ऐसे ही लगाइए, आपका सही जाएगा, गलत नहीं होगा। एक मैं प्रॉब्लम देता हूँ आप लोगों को। द सेम प्रॉब्लम एज आस्क्ड इन योर आरटीयू पेपर, and it was of 8 marks. So let me write it. So the question was like, I have to see the question. So let me see. Yeah, the question was like that: 0. 0.2, 0.4, and let me see, 0.8, 0.8, then also 0.8, 0.04, and 0.12. So this was the problem. They had asked if you have 10-year book. So actually I'm picking the problem from RTU only. Basically you have to solve those questions in the RTU paper only. So I think if you have 10 year of question paper, you can see in the 2016 paper. 2016 paper they had asked this problem. So in और section में आया था या तो हाँ प्रोबेबिलिटी का सम 1 से ज्यादा आ रहा है। 1 से ज्यादा आ रहा है, नहीं आएगा, फिर से ऐड करो। ये 0.04 0.04 है। ये 0.04 है। अच्छा 0 हाँ, नहीं सर, ये जो ऊपर है ना 0.8 ही 3 बार आ रहा है ना, तो वो तो 2.4 हो गया। हाँ, फिर से आप ऐड करके देखो, अगर ज्यादा मैं एक बार प्रॉब्लम मिला लेता हूँ। 0.12, 0.4, द प्रॉब्लम वाज लाइक दिस। एक 0.4 है, 0.12 भी है अपने पास, 0.08। ओके, सो लेट मी, आप सही बोल रहे हो, 0.08 होना चाहिए यहाँ पे। 0.08, देन 0.08, 0.08 है। अभी सही होगा, आप अगर आप फिर से जोड़ोगे तो। एक बार आप फिर से जोड़ लो, अभी शायद सही होगा। 0.08 ही है। Actually, I am taking from the RTU site only, so it is not getting 0.08, 0.08, 0.08, 0.04, 0.2. Now the problem is correct. If you can add, it will come 1. So they had asked in the 2016 paper if you are having the 10-year book. So please try to solve. Please give me the code words and entropy, code length, and efficiency. So I don't have the answer. I have to verify it because only the question was written there. So we will solve it here and we will verify it. So let me write it in the descending order here. So if you can see, क्वेश्चन सबको क्लियर है, तो 0.4 सबसे ऊपर आएगा, देन 0.2, 0.2, then 0.12, 0.12. After this, you can see 0.08, 0.08, 0.08, and 0.08, and the last you can get which one is remaining, 0.04, 0.04. So we have already arranged in the descending order.
0.04. So we have arranged. So if you can see, we'll make this two pair. So it will become. So please try to solve this problem and give me the code word and efficiency, entropy, and code length. So this question was of 8 marks. Using the Huffman coding, they had asked you to give the specific code for these probabilities, and they had asked you to calculate entropy, code length, and efficiency. So Vishu है यहाँ पे. Vishu is there. Vishu is there in. So अगर किसी को विशु से बात हो तो बताइएगा उसका डाउट क्लियर हुआ क्या. Is it now he is able to solve those log problem, Vishwender? So you are able to solve the log problem. I think you have texted me in the WhatsApp. So I have shared one video with you, and I had asked you we will discuss in the next class. So now you are able to solve this problem, log, how to deal with log. Okay, fine. So please tell me the code for this Huffman coding and this. So आप देखिए जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आरटीयू में वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, इसलिए अपने को कोई डाउट नहीं रखना है. जितना प्रॉब्लम लगाएंगे उतना क्लियरिटी बढ़ेगा. और आपके गेट में भी ये क्वेश्चन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा. तो सिंपल क्वेश्चन कभी कोई नहीं पूछेगा, इसलिए मैं हर तरह का प्रॉब्लम करा दे रहा हूँ ताकि आपको कल को कोई दिक्कत ना हो. धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि कोई अपने को डाउट नहीं रहे, क्योंकि अगर डाउट नहीं रहेगा तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे. तो आज हम हफमैन कोडिंग पे जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आता है उसको ही देखेंगे. उसके पास आप लोगों का डाटा कंप्रेशन भी एक सब्जेक्ट होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ने वाले होंगे तो उसमें भी आएगा ये हफमैन कोडिंग. तो आपके लिए अच्छा है कि अगर आप अभी सीख जाए. तो आप डाटा कंप्रेशन पढ़ लिए आप लोग? नहीं पढ़ा तो अभी नेक्स्ट या अभी किसी सेमेस्टर में आने वाला है तो उसमें भी सारे ये आएंगे, हफमैन कोडिंग भी रहेगा उसमें. तो अगर अभी क्लियर होगा तो आप आगे भी उस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा. या अगर आप हायर स्टडीज में जाते हैं तो उसमें भी डाटा कंप्रेशन पढ़ेंगे. तो ये सब आप आईटी के हैं तो आपको ये कोडिंग टेक्निक आनी ही चाहिए. आप जाएंगे जॉब में जाएंगे आपसे पूछा जाएगा ये सब. और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ भी आईटीसी है और हमको आईटीसी, हमारे यहाँ कोई और पढ़ा रहा है आईटीसी. तो आप उनसे भी पूछिएगा कि आपको उनको कितना पढ़ाया गया है, और आप खुद देखिएगा कि आपको कितना पढ़ाया गया, आपको कितना समझ आ रहा है, उनको कितना समझ में आ रहा है. So I think everybody is busy in the solving the problem. So nobody else has any answer. अगर आप so I give you 5 more minutes. Manoj is telling the answer. Let me see. Okay, I'll see Manoj. Manoj is telling 1 000 011 0010 0010 0011, and last one is
what two more 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1. So this is the answer from Manoj. Suman has also told 1 double 1 0 0 0 1 0 0. So Suman has told 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1. One more time 0 0 1 1. Then she's getting fourth part 0 1 0 0 and 0 1 0 1. So I think Manoj and Suman, you are close, but I think this is not correct. Give one more attempt. So you are close. Something you are missing here. So जब तक सभी लोग सॉल्व नहीं कर लेते आई विल नॉट डिस्क्लोज आंसर. सो प्लीज एक और अटेम्प्ट दीजिए आप. आई थिंक यू बोथ आर क्लोज. To find the answer. Manoj is correct. Manoj answer is correct. This is correct. सुमन आपका ये दोनों शायद गलत है मेरे ख्याल से. This 1 0 should be more there. Suman, one more 0 should be there. 000 should be there. Here. Suman, am I audible to you? टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बाकी वो 000 ही है सेकंड में. हाँ, तो अगर ये 000 है तो आप बिल्कुल सही हो. मनोज का भी आंसर सही है, सुमन का भी आंसर सही है. आप फिर से आप एंट्रोपी, कोड लेंथ और एफिशिएंसी निकाल के बताओ मुझे दोनों लोग. बाकी लोगों का भी ये आंसर आना चाहिए. अगर 2 लोग लगा रहे हैं इसका मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक ठाक. तो बाकी लोगों का भी आंसर आना चाहिए. सो एक बार आप मनोज और सुमन मुझे ये बताइए एंट्रोपी क्या निकल रहा है, कोड लेंथ क्या निकल रहा है, एफिशिएंसी. और बाकी लोग ये वेरीफाई करिए कि किसका किसका आंसर आ गया. व्हाट मनोज एंड सुमन हैज टोल्ड बोथ आर करेक्ट. So actually they had asked this problem for 8 marks. So see, now if you are getting, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हेमू has also told 1 0 0. Let me see. Hemu's answer 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1. Hemu, this you in the fifth part you are getting I think 0 0 1 0 0. I think this is not correct. 0 0 1 fifth part you have to see one more time. IUC has also got, IUC is also correct. IUC has also got the same answer. Divyanshi, okay, Hemu is also correct. So I think जितने लोगों ने लिखा है चैट बॉक्स में सबका आंसर सेम आ गया है. तो सही है सभी लोग. So please tell me the entropy, code length and efficiency so that you can get 8 marks for this problem. So please tell me the entropy, code length and efficiency. So, one more problem I have to give based on RTO. So Manoj, Suman, Hemu and Divyanshi, what is the entropy you are getting? So let me ask one by one, otherwise ऐसे ही चलता रहेगा और टाइम खत्म हो जाएगा. So let me ask one by one. So Aishwarya, are you getting the answer?
Are you able to solve this problem, Aishwarya? Aishwarya, can you hear me? Yes, sir. So are you getting the same? 2.41. What is the entropy? Okay, 2.41, close to 2. The answer is 2.42. Okay, so I think you are getting 2.146 like this. So okay, 2.42, and Aishwarya is correct. Amisha, what is the code length you are getting? Amisha Lodha, what is the code length? Yeah, it is correct. Divyanshi is correct. Entropy 2.41, code length. Yeah, it is correct. Amisha, what is the code length? Priyanshi is also correct. Amisha, can you hear me? Yeah, Suman, it is correct. Suman is also correct. Amisha and Anisha, are you hearing me? Hemu, it is correct. Yes, sir. So Anisha, are you getting the same code? Yes, sir. Yes, So, sir. so what is the code which you are getting? Tell me. So 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1. Okay, fine. So have you solved the entropy? Yes, sir. So what is the entropy which you are getting? So entropy is 2.41. Okay, so let me ask you some other guys. IUC, are you able to solve it? IUC, IUC and Gunjan, are you getting it? Yeah, Priyanshi, you are correct. Yes, sir. It's 97.5. Okay, fine. So I think everybody is getting Jayesh and Kiran. Jayesh and Kiran. Yes, sir. So are you getting the problem? Yes, sir. And Jayesh. So it's my first class, sir. So it is your first class. So be in touch with Yes, your sir. classmates and try to get the notes or how I have Sure. solved those problems. So otherwise you will be lagging there. Yes, sir. Yes, sir. Sure. Okay, and Komal Sharma, Komal Soni and Lakshmika Yes, sir. so Complete. completed. And Lakshmika, so I request all the guys, so please ऐसा ना करें कि मीटिंग ऑन कर दिए और कुछ काम कर रहे हैं. इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आपको क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है. अगर आप क्लास में हैं तो ऐसे लॉयल रह के रहना है, आपके लिए है, हमारे लिए नहीं. So I request everyone, if you are present in the class, be present, but mentally present रहिए. ऐसे नहीं कि मीटिंग कर दी है और फिर, क्योंकि जब भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, क्लास में आप लोग आएंगे, आई आस्क टू एवरीवन, सो व्हाट, क्या पढ़े आप लोग, आई विल गिव यू चांस टू राइट इन द ब्लैक बोर्ड. सो ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग. ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन क्लास में आएंगे मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा, आप ही लोग पढ़ाएंगे फिर मुझे. So I will write one more problem. So this problem has also came in the RTU. So let me write it. So after that we will move to some other thing. So I'll write one more problem here. So the question was like this: 0.25, 0.15, 0.10, 0.05, 0.03, 0.02, and 0.40. So this also problem has came in the RTU paper. So अगर आप देखेंगे RTU का प्रॉब्लम तो ये लोग थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं क्वेश्चन को और कुछ नहीं. So please try to give me the, so this is the last problem. After that one homework problem I will give and we will move to the other sections. So please try to solve this question. So using Huffman coding, they are asking you to calculate the code for these probabilities, and they are asking you to calculate entropy, code length, and efficiency.
So please give a quick attempt and try to solve. Give me the solution. So this is a bit complicated. If you can solve this, so I will stop here because we will move to some other sections, because now I can tell it that you can solve the Huffman problem very easily. So this is the complicated one. So if you can see, the code will come in the 6 digit, 6 or 5 digit. You have to see 6. Yeah, 6 digit. So anybody is getting any answer? So इससे ज़्यादा problem complicated नहीं आएगा. I can assure you that. IUC is telling the answer, so let me write it here. Suman has also told, so let me write. Suman has told 1 0 1 0 0 1 triple 0 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. So Suman, and now I have to write IUC's answer also. Manoj has also told, so let me write first IUC's answer. IUC has told 1 0 1 0 1 triple 0 1, same. Then 4, I think she is differing here, so she is getting others 1 2 3 4 0 1, and same. Then this is also same. So this is IUC. Let me write Manoj answer also. Manoj is giving 1 0 1 0 1 triple 0 1 4 times 1. Okay, Divyanshi has also got some answer. 1 0 1 0 1 triple 0 1 4 times 0 1 6. सुमन 0.5 का कोड 4 0 होगा. ओके, Divyanshi, Hemu. Okay, so so 4 or 5 people are always getting the answers. Rest are right now. So rest are struggling, I think. So Suman, IUC,
Priyanshi, Manoj, and Divyanshi. These people are getting the answer. So please tell me the Aishwarya has also got 0.40. So what is this 0.40, Aishwarya? So let me write the correct answer here. So I will average code length 2.3. Okay. So the correct answer, if I can write here, so correct answer will be 1. Okay, 0, 1, 001, 001, 4 times 01. So this is the correct answer. So if how many? I think 3. So one, this is your wrong. I think this thing you have to see. This one and this one. सर करेक्शन कर दिया था. अच्छा, मनोज का ये सही है. So I think I see what you have written. I can't see. Average code length 2.3. Who would find entropy from? Who would find entropy? I think you need to find entropy. Okay, so tell me the entropy. How much entropy you are getting? So everybody is getting the code length. Nobody is getting the entropy. So what is the entropy you are getting? So entropy, please tell me code length is correct. I wanted to know entropy. Anybody is there who has find the entropy? Sir, Please tell. sir 2.25. Entropy. What is entropy you are getting? Sir 2.25. No. Entropy. Komal, what is entropy you are getting? 2.25. Entropy will be 1.91. 1.91. Anybody is getting the same entropy? This one, this much. Then if you will find efficiency, so I think some mistake you are doing. 83.37% will be the efficiency. So अगर आप लोगों ने कोड लेंथ निकाल लिया है तो एंट्रोपी निकालने में दिक्कत नहीं होगा. कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग और कुछ नहीं. तो इसलिए जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे फिर आपको पता चलेगा दिक्कत कहाँ हो रहा है. जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे हम लोगों को प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा. सो आई विल राइट वन होमवर्क प्रॉब्लम फॉर यू एंड वी विल solve this problem in the next class. I will see the answer for this problem. I will write one homework problem for you. So try to solve this question by your own. बिना किसी की मदद लिए करिएगा ये प्रॉब्लम. So I'll let me write the homework problem. So it was like this: 0.19, 0.16, 0.15, 0.10, and 0.40. This is one homework problem, and this all has came in your paper. So if you don't have 10-year book, buy it, or you can see from net. So you can find the same paper. One more problem I can write for you: 0.15, 0.15, 0.10, 0.10, 0.05, 0.25, and 0.20. So these two homework problem, we will discuss the solution for this problem in the next session. So please try to solve this by your own. अगर खुद से आप लगा देंगे तो ये क्वेश्चन फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा हफमैन में. So please try to solve it by your. मैं अभी चाहूँ तो सोल्यूशन बता सकता हूँ पर उसका कोई फायदा नहीं है. So we will match it in the next class. So is this problem is clear to you? Sir. हाँ बताओ.
सर वो लॉग सोल्व करने वाला आप वो मतलब वीडियो आप शेयर कर देते तो ठीक रहता सर। एक्चुअली सर लॉग जिस सोल्व करने में जिस गलती हो रही है। जिसको भी दिक्कत है आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करिएगा, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। और अगर उसके बाद भी ओके अगर सर। दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई टू इंस्टॉल कैलकुलेटर हियर इन दिस लैपटॉप एंड आई विल शेयर माय स्क्रीन। अगर ज्यादा लोग ओके को सर। दिक्कत हो रहा है तो आई विल ट्राई टू इंस्टॉल कैलकुलेटर, जो साइंटिफिक वो लॉ कैलकुलेटर वो इंस्टॉल करके मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा दूंगा। अभी ये सुविधा नहीं इसलिए, नहीं तो मैं पहले ही बता देता आपको। सो आई ट्राई टू प्लीज पिक मी द व्हाट्सएप, आई शेयर दो वन वीडियो टू यू। उसके बाद भी अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं इसमें इंस्टॉल करके आपको बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द टू प्रॉब्लम, अपने अपने हिसाब से सॉल्व करिएगा। और इसी के साथ हम लोग हफमैन कोडिंग खत्म कर दिए। सो नेक्स्ट क्लास में ये सोर्स कोडिंग का पार्ट था। सो नेक्स्ट क्लास में चैनल कोडिंग के एक लीनियर ब्लॉक कोड पढ़ेंगे हम लोग, लीनियर ब्लॉक कोड। So we'll try to meet in the next class and we will try to study linear block code in the next session. Or we will discuss these two problem. Your next class will be on Monday. So I will inform to your CR कि जब भी वो free होंगी, she will tell me the timetable. So we will arrange our next class for in Monday. So thank you for today. So uh, please I request your CR to please send me the attendance list. So thank you for today. We will try to meet in the next session. And one more thing I wanted to tell you, I think 42 people has already joined the Google Classroom. So I have opened here. So I am telling, so I request your CR to tell everybody to join this Google Classroom. So because all those things I will from the next week I will share the some notes and all those things in this Google Classroom only. Your paper will be there in the Google Classroom only. So only 42 people are there. I think your strength is close to 58 or 57. So please remind everybody those who have not joined. So join this Google class. I had already shared you the link. So thank you for today's session. We will meet in the Monday. So please solve those two problems. We will discuss this problem in the Monday session and we will see linear block codes. So thank you.